नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय हिंद जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ और हम हैं नेशन नाउ पर, हर रोज की तरह नेशन नाउ पर। प्रदीप जी, आज नरेंद्र मोदी जी मुंबई शहर में हैं। नरेंद्र मोदी जी जहां हैं और अटकलें बहुत लगाई जा रही हैं कि कहीं राष्ट्रपति पद के लिए कौन दावेदार होगा, कहीं उसकी बातचीत तो नहीं हो रही बैकडोर से, ऐसा कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है, संजय राउत जी जो हैं शिवसेना के, उन्होंने कहा कि शरद पवार जी को होना चाहिए राष्ट्रपति। शरद पवार जी ने मना कर दिया, मुझे राष्ट्रपति का पद नहीं चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पुराने मित्र जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो केरल के गवर्नर हैं, वो शायद फ्रंट रनर हैं, ऐसा लगता है। आई थिंक पॉसिबली मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ केरला, will be probably the next president. I'm not sure, but that's what it looks like. Now do remember, ये जरा याद रखें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी बीजेपी ने ही बनवाया था राष्ट्रपति, और उनकी सेकंड टर्म के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको नॉमिनेट किया था। कांग्रेस जो एक सेक्युलर पार्टी है, गैर सांप्रदायिक पार्टी है, उन्होंने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपोज किया, उनका विरोध किया, और उनकी जगह पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम आगे रखा और प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनी। एक और भी चीज कही जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है that there may be a dark horse somewhere, that there is a possibility that there might be an Adivasi lady, very highly qualified Adivasi lady who just, Vanvasi, tribal, who just might become the next president of India. Pradeep ji. Bilkul sir, bilkul. Surprises. Mr. Modi is always full of surprises. But right from his demonetization day, मैं कल से आपको कल से नहीं, रात के 12 बजे के बाद मेरा ये कहना है, यहां पे कुछ और सवाल पूछ रहा हूं मैं। yes. अब राष्ट्रपति पद का पिछली बार भी राम कोविंद जी का नाम फाइनल हो गया। yes. अब मेरा ये कहना है कि एलके अडवाणी जी का क्या होगा? मतलब जिन्होंने आज की भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, जिनके राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से आगे चल करके यहां तक आई, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की राजनीति को बिल्कुल अपनाया, जिसकी वजह से आज नरेंद्र मोदी दूसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री बने। लाल कृष्ण अडवाणी जी को तो मानो लोग भूल ही गए हों, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को मान लो भूल ही गए हों। आखिरकार, डोंट यू थिंक this is terrible? I mean, you know, at least we all used to think, चलिए लाल कृष्ण अडवाणी जी प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, राष्ट्रपति शायद जरूर बनेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो भी नहीं बनेंगे। यहां तक कि उनका नाम चर्चा में भी नहीं है, और हम लोग जबरदस्ती उनकी बात कर रहे हैं। इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी की वस्तु स्थिति में वृद्धि की बात होती है, हमेशा लाल कृष्ण अडवाणी जी का नाम आता है। लेकिन लाल कृष्ण अडवाणी जी हैज ऑलवेज बीन अ ब्राइड्समेड, नेवर अ ब्राइड, एंड आई थिंक दैट स्टेटस इज नॉट गोना चेंज। प्रदीप जी। Sir, when Sonia Gandhi ji जब बोले कि the president should protect the constitution, we should have a president who protects the constitution. Now definitely she's sending a message, but the message would have been much more clear if she also said that I propose or think that this particular person is fit to be the president. Instead of Sanjay Raut taking Sharad Pawar's name and asking the BJP support, it was very prudent if
Sonia Gandhi would have taken Sharad Pawar's name. Yes. Said that he is the right candidate to be the president of this country. She has said the constitution need to be protected. She has echoed the sentiments of the Congress that there are certain segments within the society, within the country, that lives in a state of fear. There is a need to instill confidence in them. There's a need to instill a sort of secular credentials of this particular government across the rank and file, across the population, across every segment of this nation. And all over the world. All over the world, and also carries all over the world. But you need to, now you got hardly a month to decide who is going to be the president. That's right. And you have not even had a meeting among all the opposition parties coming together to decide who could be our probable candidate. Yes. The single largest party after the BJP Is the Congress. the Congress. And the Congress has not proposed a name. That's right. Now, when we say Sharad Pawar, yes, Sharad Pawar is a great leader. Sharad Pawar is a great leader, a very mature leader. His contribution towards Maharashtra and towards the nation cannot be ignored. He has served in the Union Cabinet in various positions, the defense, agriculture, you name it. Very important portfolios, and he has done it very efficiently, very well. He has been the entire part of Maharashtra politics for a long time. Whoever was in Delhi, Youngest chief minister. youngest of chief minister, he has got a lot of things for his credentials. Yes. You know, and Congress should have taken his name. Yeah. You know, in case, because you know that within the Congress there is a problem, you don't have a right candidate, or you are not even put up a right candidate. Or any other name. Any other name. Any other name. You're absolutely right. Or Yes, any other name. Yes. No, you need to. BJP, as you said, Mr. Modi always brings surprises. Mr. Kovind was a surprise for everybody. Everybody thought Advani's name would have come in last time. But, and with Mr. Advani, even now, as he says, शायद Advani जी के सपना जो है, एक Prime Minister बनने का वो अधूरा रह गया. If not the Prime Minister, at least Rashtrapati, as the President. Now, what is the, when Sonia Gandhi talks about the President should be one who protects the Constitution, how does the President protect the Constitution? He is the ceremonial head. Definitely appoints the Prime Minister and his cabinet. But beyond that, what can a President do? It is the Prime Minister and his set of cabinet that decides all policies, everything that is required for the nation, because they enjoy the majority in the parliament. So she signified that yes, this is what is Congress's thoughts, this is Congress's vision, and this is the pulse of the people. Certain segments of the society feel like that, and she's accorded. But ultimately, you need to, as we have been talking about political analysts, 2024 बहुत दूर नहीं है, मगर आपका बैटल, आपका प्लानिंग आज से होना चाहिए. The entire opposition doesn't seem to know anything about this entire thing. The process of the presidential election, it has come. बिल्कुल. ममता जी ने अभी प्रपोज किया था पिछले हफ्ते कि भाई सारी गैर भारतीय जनता पार्टी या गैर एनडीए पार्टी जो हैं वो एक बार मिल लें और अपने यूनाइटेड कैंडिडेट के ऊपर आम सहमति बना ले. वो भी मीटिंग नहीं हो पाई. अभी आई मीन जिस प्रकार से संजय राउत जी ने शरद पवार जी का नाम लिया, it is Sharad Pawar also doesn't take it very seriously because he's a tall leader. He's a tall leader. He'll not go for these gimmicks. He doesn't want to be a part of a political, simply, TikTok movie kind of a thing that people take. Anybody takes his name. As we talked, if Sonia Gandhi was proposing Sharad Pawar's name, then it would be serious. It would be serious. If the entire, even a non-Congress-led opposition would have announced that Sharad Pawar is the right candidate, he would have given his word. Yes, I'm also for it. Yes. But any single person just taking his name doesn't make sense. He doesn't want to be a part of political talk and just for the sake. He also knows it that somebody, any name that comes, वो बड़ी हल्की बात है. हल्की बात हो जाता है. And a very serious and very senior politician, a tall leader like Sharad Pawar doesn't need to be a part of this politics. That's right. But this signifies what is the opposition doing? Are you at all concerned about the affairs of the state? I think they've given up. Are you at least concerned about the affairs of the nation? The single largest, after the BJP, the single largest opposition party is the Congress with 20% vote share. And they don't seem to be in sync with what should be happening in the nation. That's right. आपने ये पहले, अभी ये सब चीज़ बहुत पहले प्लानिंग होता है, everything.
पहले प्रपोज होते हैं, सब पार्टी सर्वदल बैठक होता है, एवरीबडी कम्स टुगेदर, नॉन पार्टी तो कांग्रेस वाले होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये लास्ट मिनट में 1 महीने में क्या होगा? कुछ नहीं। आपने कुछ तय नहीं किया, 1 महीने तो आपको सबको जोड़ने में लगेंगे, एक जॉइंट, एक यूपीए के सब एलाइंस को साथ में लेके एक बैठक बुलाने में 1 महीने चले जाएंगे, और आपके चुनाव हुए 1 महीने के अंदर। तो here we find the opposition is not at all in cohesion or in unity where affairs of the nation is concerned. ये कुछ नहीं हो रहा है। How are they going to be prepared for 2024? 2024 में क्या होने वाला है? इनको कुछ मालूम ही नहीं है, अपने लीडरशिप कैसे है, कौन होगा, क्या नहीं होगा। The presidential elections is actually an acid test for 2024. कि what is the combined opposition intend to do? What are the plans? What are the objective? हर चीज में एक ही डायलॉग होगा, सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को हमको बचाना है। मगर आप कैसे बचाओगे सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को? कैसे आप एक जॉइंट डिसीजन, आप सब साथ में आके एक साथ बैठते नहीं हो, आप साथ में एक साथ आके कुछ बात नहीं करते हो, एक साथ earlier, if you were really serious for 2024, where all the entire opposition gets together, I think you should have a meeting once a month to have a common aligned program, once in 2 a months. common minimum program among all the people, all the parties, the big parties, to at least decide how you take on Mr. Modi, because these become a giant. The BJP has become a giant. How are you going to policies? And there are 365 days, 24/7 election mechanism, election machine in work. Everything is planned. Everything is planned for them. And here आपके एक संगठित एक ओपिनियन भी नहीं है, एक प्लान भी नहीं है, एक स्ट्रैटेजी भी नहीं है। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि आज की तारीख में सिर्फ सुश्री ममता बनर्जी जो हैं, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, केवल उन्होंने ही ये प्रपोजल रखा था कि भाई एक मीटिंग कर लेते हैं फटाफट और ये तय करते हैं कि गैर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। उस मीटिंग के ऊपर मीटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, प्रदीप जी सुनने वाली बात है, मीटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पर भी आम सहमति नहीं बन पाई है, तो कैंडिडेट पर कहां से बनेगी? मेरा तो ये कहना है। और दूसरी चीज है, आपको नवीन पटनायक जी को आपको यू मस्ट टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस, वाईएसआर को आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, केसीआर को आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, स्टालिन साहब को आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, आपके जो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, आपको आम आदमी पार्टी को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, सबको मिलकर के यह तय करना चाहिए कि भाई आपका राष्ट्रपति पद का दावेदार कौन होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इन इफेक्ट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट दी नॉन बीजेपी पार्टीज हैव गिवन अप, सीधी सादी बात है। और यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अडवाणी जी के बारे में, चलिए दैट वाज एन असाइड, मुझे नहीं लगता वहां पर कुछ होने वाला है, ये तो हम लोगों की बातचीत हो रही है। यदि मान लीजिए आरिफ मोहम्मद खान साहब को राष्ट्रपति बना देते हैं, तो उससे एक बहुत जबरदस्त संदेश जाएगा पूरी दुनिया में कि देखिए, जहां बार बार ये कहा जा रहा है एक लॉबी द्वारा, और याद रख लीजिए वो कौन सी लॉबी है, और यहां पर मैं दोबारा बोल रहा हूं, और इसके ऊपर हम एक शो करेंगे, पूरा शो करेंगे कि किस तरीके से हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समुदाय है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, सिर्फ 2 पार्ट में नहीं है। वैसे इस्लाम में 72 फिरके हैं, और सारे फिरकों को अगर आजादी किसी देश में है अपने तरीके से नमाज पढ़ने के लिए, अपने तरीके से इस्लाम प्रैक्टिस करने के लिए, वो आजादी सिर्फ और सिर्फ एक देश में है। कौन सा देश है वो हिंदुस्तान है। एक मिनट बस एक मिनट प्रदीप जी, उसके बाद मैं देता हूं आपको। आप पाकिस्तान में जाइए, वहां कहा जाएगा अहमदिया मुसलमानी नहीं है। आगे जाएंगे, फ्रंटियर की तरफ जाएंगे, बलूचिस्तान की तरफ जाएंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि हर जुम्मे के दिन, हर जुम्मे की नमाज के वक्त शिया मस्जिद में, हजारा मस्जिद में हमेशा कोई ना कोई बम ब्लास्ट होता है। आप ईरान में जाएंगे, वहां विच इज द मेन रिलीजन? शिया, सब शिया हैं। बाकी जगह जाएंगे, सब सुन्नी हैं। वे द शियाज आर लुक डाउन अपॉन। इनफैक्ट इवन इन सऊदी अरेबिया शिया मस्जिद है, लेकिन शियाओं को साफ तौर पर हिदायत है कि आप इस दायरे में रहेंगे, उसके बाहर नहीं आएंगे। सिर्फ एक हिंदुस्तान है जहां पर किसी को कोई पाबंदी नहीं है, याद रख लीजिए। इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, अब दुनिया में नहीं है। वो ये कहा करते थे, अगर पूरी दुनिया में कोई इस्लामी देश है
देयर इज ओनली वन इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड. आपको मालूम है वो क्या है? दैट इज इंडिया. हिंदुस्तान है जो अकेला इस्लामी देश है. और यहां पर कुरान की जो आयत है एक, वो याद आती है. हुजूर ने यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रॉफिट हिमसेल्फ, में पीस बी अपॉन हिम, क्या कहा उन्होंने? हिंद से मुझे ठंडी हवाएं आ रही हैं. दुरुस्त बात है. ये ठंडी हवाएं क्यों आ रही थी? कि उनको उस वक्त भी मालूम था कि अगर इस्लाम में किसी को उसके पूरे हक दिए जाएंगे तो वो सिर्फ हिंदुस्तान में दिए जाएंगे और कहीं नहीं दिए जाएंगे. और यहां पर अगर आरिफ मोहम्मद खान साहब को राष्ट्रपति पद का दावेदार बना करके उनको राष्ट्रपति बना दिया जाता है, इट विल सेंड अ फैंटास्टिक मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सारी दुनिया चुप हो जाएगी. याद रख लीजिएगा. और याद रख लीजिएगा, हिंदुस्तान को यहां पर कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है. यहां पर भी तीन तीन मुस्लिम राष्ट्रपति हो चुके हैं. डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. वी हैव हैड 3 presidents who have been Muslims. आप मुझे एक इस्लामी देश बता दीजिए जिसमें किसी गैर मुस्लिम को इतना बड़ा पद दिया गया हो. लेकिन कंपैरिजन ठीक नहीं है. कंपैरिजन क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हिंदुस्तान में मजहब की कोई अहमियत नहीं है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं. जैसे प्रदीप जी बार बार कहते हैं, वी आर अ सेक्युलर नेशन विद इक्वल राइट्स फॉर ऑल. हर एक को पूरे हक हैं और देश धर्मनिरपेक्ष है. यानी स्टेट के अफेयर्स में, सरकार के व्यवहार में धर्म नहीं आएगा. आप मुसलमान हो, हिंदू हो, जो मर्जी हो, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, होम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन सकते हैं. यू कैन बी द चीफ ऑफ एयर फोर्स ऑल्सो. आफ्टर ऑल वी हैड एयर चीफ मार्शल अब्दुल लतीफ, Air Chief Marshal Latif as the chief of the Indian Air Force. We have had God knows how many lieutenant generals and major generals who have been Muslims and still are, by the way, serving in the Indian Army and with great distinction, and we are very, very proud of them. Not because they are Muslims, but because they are great soldiers. यहां पर आज की तारीख में जो ये नुपुर शर्मा वाला मामला हुआ और उसके बाद उसका जो आफ्टरमैथ हुआ, उसके बाद कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब अमीराती, जितने भी मुल्क हों, और उसके अलावा हिंदुस्तान में जो एक फिरका है, अशराफ का जो एक फिरका है, जो जान जान के हिंदुस्तान की छवि को खराब करना चाहता है पूरी दुनिया में. अगर आज आरिफ मोहम्मद खान को राष्ट्रपति बना दिया जाता है तो मैं ये मान करके चलता हूं सबके मुंह बंद हो जाएंगे. लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर. सबके मुंह, और वो मुंह ऐसे बंद होंगे कि किसी के पास कुछ कहने को रहेगा नहीं. प्रदीप जी. Sir, what you're saying is right, perfectly right. Arif Mohd Khan is a fantastic candidate. Very progressive in his thoughts, very forward-thinking, very articulate. He knows the Quran left, right, and center. He knows everything about it, left, right, and center. And he's very progressive. He's very modern in his thoughts, and he incorporates modernism into his the entire philosophies of Quran. That's right. And we need. And second thing, you talk about relationships. Probably he might foster a very good relationship among the Middle East, among all the countries, and more show to the entire world what image right now is. It will be a very public relation exercise by appointing with the president. But is Mr. Modi guided by these principles? You never know. Mr. Modi is not guided by these principles. Yes, he's not. He may not. Because he understands his is a 24/7 election mechanism that is working on scientific analysis of winning elections. Whatever you do, he knows that this 14% of the Muslim population is never going to vote for 220 million, 22 करोड़ कभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे. तो अगर जो आपने दूसरे ऑप्शन बोला, Arif Mohd Khan, a fantastic person, a very forward, a very modern thinking, a very genuine person, very intellectual, very of a big breed. But if you incorporate a Dalit lady, that's right,
You know, there's every possibility, the UP experiment and every other experiment, Mr. Modi, by empowering the OBC and the backward community, has reaped huge benefits. Huge electoral benefit. इलेक्टोरल बेनिफिट्स जो जितने भी दलित वोट थे वो कभी बीजेपी की तरफ मुड़ के कभी नहीं आता था, बट आज के तारीख में उनके सोशल एम्पावरमेंट के बाद, जो सोशल एम्पावरमेंट के उन्होंने जो फॉर्मूला निकाले हैं, दलित वोट्स को स्प्लिट करके अलग अलग सेक्शंस को उन्होंने जाटा वोट को छोड़ के, यस जाटा और थोड़ा यादव वोट को छोड़ के, बिकॉज दे ऑलरेडी एम्पावर्ड, द रेस्ट जो शोषण हो रहा था उन सबको उठा के उन्होंने मंत्री बना के, उन्होंने एम्पावरमेंट प्रोसेस में उनको एम्पावर करके, उनको पावर दे के, उनको एक क्लास में अपलिफ्टमेंट लेके आके, he found that experiment has brought him great results. That's right. The BJP has reaped hugely by this social formula of empowering the backward community. So why can't he have a lady Dalit, that as you were talking about, a lady Dalit president would give a massive swing among the backward community votes. Dalit or Adivasi? Dalit Adivasi, yes, to the BJP. Yes. And BJP will gain. Look at them at 38%. Mayawati had 4% votes. If you see a pan-India presence of Mayawati is 4%. और बाकी छोटे-छोटे leaders लेके 5-6%. So if he does this experiment of social engineering, empowering the backward community by making them a president of this country, the BJP is going to reap, and their vote share might take a jump from 38 to 48% to 50%. They'll be unbeatable. Yes. BJP for the next 10 to 15 years will be unbeatable with this kind of a formula. So definitely Advani is out of choice. Because you don't want a president who will be monitoring Mr. Modi on day-to-day basis and telling him what to do. Yes, and refusing to sign on the dotted line. Refusing to sign. And I remember like Zail Singh, yes, during Rajiv Gandhi's last 2 years. Yes. Yes. How Zail Singh had troubled Rajiv Gandhi. That's right. I mean, you don't want Mr. Advani troubling Mr. Modi at all the time. Means, ये bill वापस भेज दिया, इसको reconsider करो, इसको वापस आप सोचो. So, Arif Mohd, a fantastic choice, but we know the way there's one other choice. The BJP thinks. They think about their engineering process, their political process, their inclusive politics process, and in their inclusive politics is empowering the Dalits, the backward community, to see that they are permanently cemented into a vote bank of the BJP. And they will probably, and Mr. Modi, as you said, is always full of surprises. Yes. Mr. Modi has always surprised the country. He has surprised the world. And he's never ashamed of the very fact that he came from a very humble background. That's right. In You fact, never had. He has used it as a strength. Used it as a strength. And that has motivated this 80% or 90% of Indians who are actually coming from a very backward and poor community. Hardly you find 10% in the cities who are really doing well. 80% farmers or 90% who are just managed to just break manage to survive. And that's a great hope and aspirations of seeing Mr. Modi as a Prime Minister. Fulfills and instills hope within every Indian that even I can do something, even I can be. And if he starts with this particular empowerment process of a woman Dalit, a woman backward, or a tribal being the president of the country, you have got BJP on track for another 15 to 20 years, unbeatable. And the social empowerment plan of the BJP will be a success for Modi. Modi's already created history for himself. Every terms, next right from demonetization to some reviving Aurangzeb era to GST to anything you talk about. He is the only person who's already written himself in the history books. And surgical strikes. Surgical strikes. And here too, he might, write himself again to the history books with a social empowerment plan. There's only one small thing that I have to say at the end, because we really have come to the end of the show. The tribal lady that he just might nominate as the president could also be from the Northeast. Okay. We have never had a person from the Northeast as the president of the country. So if I know Mr. Modi, his brain would be working in that direction, because he loves springing surprises. And that is one region, by the way, of the country
which needs to be integrated totally with the rest of the Indian Union, considering what China is doing over there. जिस प्रकार चीन का वहां पर आक्रमण है और जिस प्रकार चीन के आक्रामक इरादे सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं, हो सकता है वहां के कुछ स्टेट जो हैं, 7 या 8 जो हमारे 9 स्टेट जो हैं हमारे पूर्वोत्तर के, हो सकता है कि ये वनवासी या आदिवासी महिला शायद वहां से भी हो सकती है. That is just speculation, by the way, but all the same. That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. From me, Rajiv Bajaj, and Advocate Pradeep Nambiar ji, that's all that we've got for you tonight. We'll see you again tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद.